In this question, we have energy flux of sunlight reaching the earth. Okay, it is given. And we have to calculate how many photons per square meter are being incident on earth's surface per second. So, suppose if this is earth और ये सन है, सन में से लाइट इंसिडेंट हो रही है, जिसका एनर्जी फ्लक्स जो है वो इतना है, और हमें ढूंढना है कि इतने एनर्जी फ्लक्स वाली सनलाइट को जब अर्थ के सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं तो अर्थ के सरफेस में से सपोज मैं 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं एरिया सिलेक्ट करूं तो इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आकर इंसिडेंट होते हैं इन 1 सेकेंड. This I have to calculate, and the wavelength of this photons is given. Wavelength is 550 nanometer. Okay, so see energy flux यहाँ पर आपको दिया हुआ है, उसकी यूनिट भी दी है. तो first we'll try to understand this. What is energy flux? So energy flux is actually total energy per second per meter square. The amount of energy which reaches the area of 1 meter square in 1 second is known as energy flux. So now from this definition, suppose if I write the formula of energy flux, तो वो formula कैसा हो जाएगा? Just see. Energy flux is equals to total energy, right? So I'll write total energy per second per meter square. So multiply by meter square. Now just see this energy per second. ये किसका फॉर्मूला है? Energy divided by time gives you power. So energy flux actually it is power per meter square. Now you just see the unit. Energy flux is watt per meter square. Watt किसकी यूनिट होती है? पावर की, divided by meter square. Okay, so this is how you can understand what energy flux is. सो अब हमारे पास दो गिवन क्वांटिटीज हैं, एक तो एनर्जी फ्लक्स दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इज बीइंग इंसिडेंट ऑन अर्थ सरफेस. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड आर बीइंग इंसिडेंट ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सरफेस. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो एनर्जी फ्लक्स के फॉर्मूला में से हम नंबर ऑफ फोटॉन्स का इक्वेशन बनाएंगे. सो द फॉर्मूला फॉर एनर्जी फ्लक्स वाज लाइक दिस. सो सी एनर्जी फ्लक्स. नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी चाहिए मुझे, तो टोटल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू ई. E is energy of one photon, right? But I have n number of photons. इस light में कितने photons होंगे? N number of photons will be there. So total amount of energy will be what? Number of photons multiplied by energy of one photon. So it will become n into E divided by second. सो वो तो 1 हो गया, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपके यूनिट में आ जाएगा. ठीक है, मीटर स्क्वायर. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स विच आर बीइंग इंसिडेंट इन दिस मच रीजन इन 1 सेकेंड. सो फ्रॉम दिस आई विल मेक n subject of equation. So n is equals to energy flux divided by E.
divided by E. This E is energy of photon. So ये energy of photon मुझे calculate करना पड़ेगा. So suppose this is equation 1. Now I will calculate energy of photon. E is equals to hf, but they have not given me frequency. They have given me wavelength, right? So हम क्या करेंगे, इसको wavelength के terms में convert करेंगे इस equation को. So instead of f, I'll substitute c divided by lambda. अब इन सब की values डाल देंगे हम. So Planck's constant is 6.63 into 10 raised to minus 34 multiplied by the c is 3 into 10 raised to 8, and this wavelength is given 550 nanometer. उसको हम convert कर देंगे मीटर में. So it will be 550 into 10 raised to minus 9 मीटर. अब जब इसको आप सॉल्व कर लोगे सो आपको आंसर मिल जाएगा 3.62 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल. क्योंकि ये प्लैंक्स कांस्टेंट है यहाँ पर, तो एनर्जी हमको जूल में मिलने वाली है. सो दिस इज माय इक्वेशन 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी इन इक्वेशन 1. N is equals to energy flux तो मेरे पास था, it was given in the question this much. Okay, energy flux is given और energy of photon अभी अभी हमने calculate कर लिया है. So N is equals to energy flux divided by capital E. Value of energy flux is 1.388 into 10 raised to 3. Energy of photon अभी अभी हमने obtain किया है 3.62 into 10 raised to minus 19, and this gives me 3.8 into 10 raised to 21. So these many number of photons are being incident on Earth's surface per meter square per second. तो इसकी यूनिट मैं कैसे लिख सकती हूँ? These many number of photons per meter square in 1 second. So this is the unit, photon per meter square into second.